Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. In the topic arithmetic progression exercise 5.2, today I will be solving question number 16, 17, 18 and 20. So first let me start with 16. How we can solve the question? Read the question carefully. The key to solve any problem in a successful way is how you read the question. Determine the arithmetic progression whose third term is 16. So from what is given, how you interpret is the main thing to get a correct solution. He has given that third term is 16. What is given to me? Third term is 16. And what I understand is third term is 16 means what? A plus 2D is equal to 16. This is what I understand. From what is given, what you interpret is very important. So determine the AP whose third term is 16. Third term is 16 means A plus 2D is 16. Seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term means what? Seventh term exceeds the fifth term by 12. What does it mean? It means that if you add 12 to the fifth term, you will get the seventh term. यानी अगर 12 फिफ्थ टर्म को आप 12 प्लस कर दोगे तो सेवन्थ टर्म मिलेगा. तो आपको क्या बताना है? एपी बताना है. तो एपी आपको बताना है. एपी आपको बताना है नहीं, क्या आपको चाहिए? आपको ए चाहिए, डी चाहिए. क्योंकि अगर आपको ए मिल गया और डी मिल गया तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होगा ए प्लस 4d. तो इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा. इट विल कंटिन्यू. But for that purpose, we need the first term, we need the common difference, then only we can solve. So now, from this data, what data is given to you? Third term is 16, seventh term is 12 more than the fifth term.
you have to tell the AP. Now a plus a7 is given to means what is given to me? A plus 6d is equal to a5 means what? A plus 4d plus 12. This is given to me. Now see, plus a, if I transpose it to the left side, it will get cancelled. So I need not have to waste my time in transposing it. Directly it can be cancelled. Plus 4d, if it is transposed to left hand side, 6d minus 4d, that will be equal to 2d is equal to 12. So if 2d is equal to 12, then children, it is very simple. D is equal to 12 divided by 2. D is equal to 12 divided by 2, that is 6. Now let me put the value of D here. So what I'll get is a plus 2 into 6 is equal to 16. So that will be equal to a plus 12 is equal to 16, and that will be equal to, if I transpose it to right hand side, 16 minus 12 is 4. So the first term of this arithmetic progression is 4, common difference is 6. Now I have to write the arithmetic progression. If I have to write the arithmetic progression, then you know we have to write a is 4, then a plus d, 4 plus 6, then a plus 2d, that means 2 into 6, and then if you want the fourth term, then a plus 2 into 3d, 2 into a plus 2d, then a plus 3d, that way it continues. And d is how much? D is 6. D is 6. So if you want the AP, then 4 plus 6 is how much? 10. Then how much? 2 6 are 12, 12 plus 4 is how much? 16. Then 3 6 are 18, and 18 plus 4 is how much? 22. Definitely next term you know what it will be, 28, and that way the AP will continue. So my dear children, I got the third term. The first information that is given to me is third term is 16, sir. Second information that is given to me is fifth term plus 12 is seventh term. Tell us the AP. So in that case, you have to write the first term. You should get the first term from that information. From that information, you have to get the common difference. And then once you get the first term and the common difference, you can write any AP. So I hope you understood this problem. इस तरह से आपको तो तीसरा टर्म आपको दिया है, सातवां टर्म पांचवा टर्म के अंदर 12 जोड़ने के बराबर अगर हो तो इससे आप ए ढूंढ सकते हो, इससे आप डी ढूंढ सकते हो, और ये दोनों मिलने के बाद एपी आप लिख सकते हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 253. यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 20th टर्म देखते हैं, एपी को देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इट इज़ रॉन्ग माय डियर चिल्ड्रन, बिकॉज रीड द कंप्लीट क्वेश्चन. कंप्लीट क्वेश्चन सेज फ्रॉम द लास्ट टर्म. कहाँ से शुरू करना है आपको? फ्रॉम द लास्ट टर्म आपको बताना है कि व्हाट विल बी द, यानी यहाँ से अगर हम शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से अगर शुरू करें तो 20th टर्म क्या होगा. यानी आपको शुरुआत यहाँ से नहीं करनी है, शुरुआत आपको ऐसे करनी है. तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा 253. हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, आप ऐसे कह दूं तो चलेगा मेरे ख्याल से बेहतर. हमको शुरुआत ऐसे करनी है. 253 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, 248 हमारा सेकंड टर्म होगा, और इस तरह से करते करते हम जाएंगे 13, 8 और 3 तक जाएंगे. तो उल्टा हम आ रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 253. तो नेक्स्ट आएगा बच्चों, ये फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट टर्म हमने लिखा यहाँ पर. उसके बाद आपको फार्मूला लिखना है. क्या फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला आप जानते हो अच्छी तरह से. फार्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर a1 कहिए या a कहिए, जो भी आप कहो उससे, वो हमें मिल गया. वो कितना है? 253. उसके बाद n आपको चाहिए, n है 20, n है 20, तो इसको आप लिखिए 20 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस, हाँ ये बहुत ज़रूरी है.
बच्चे अक्सर कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं बच्चों, 5 लिखते हैं। क्यों? वो कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। सही कहा था मैंने, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपको वैसे ही करना है, मगर याद रखना हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट +5, कॉमन डिफरेंस इज -5, बिकॉज 253 से शुरुआत करके वी आर गोइंग टू 248, 243, दैट वे अप टू 3। सो दैट मीन्स द नंबर आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा 248, यानी 248 माइनस 253 एंड दैट इज इक्वल टू -5। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस गलती को कृपया ध्यान में रखिए आप। तो ये होगा बच्चों -5, तो ये दिस विल बिकम 253 प्लस 19 इंटू -5, दिस विल बी इक्वल टू 253 प्लस ऑफ प्लस इज प्लस, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, 5 9 जा 45, carry 4, 5 1 जा 5 plus 4 is how much? 9. Then how much we will get? If you subtract it, then you will get say 20th term from the last term. Remember n is 20, so this is 20th term we are finding from the last term, not from the first term. So if I find out, then 13 minus 5, 13 minus 5 is 8. Okay, so 13 minus 5 is 8, what remains here is 4. Then again if you take one carry here, 14 minus 9 is 5, and here what remains is 1. So that means if you continue the AP like this, from the last term if you come to the 20th term, you will be getting 158. Then next question is the sum of the 4th and the 8th term is 24, and sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the 3 terms of the AP. Very simple question. If you see it, 4th and the 8th term is 24. See how I write it. 4th term and the 8th term is equal to how much? 24. 4th term and the 8th term is how much? 24. 4th term means how much? A plus 3D. 8th term is how much? A plus 7D is equal to 24. Sum of, see the question, see the keywords here. Sum of 4th and the 8th term is 24. That means A4 plus A8 is 24. That means A plus 3D, A plus 7D is 24. If I further simplify, A plus A is 2A. 3D plus 7D is 10D is equal to how much? 24. If I take 2 common here, then A plus 5D is equal to 24. 2 cancels here, so finally what I get is A plus 5D is equal to 12. This is the first equation. This is the first equation. The sum of the 4th and the 8th term is 24, and the sum of the 6th and 10th term is 44. That means what? 6th term and the 10th term, how much I am getting? 44 I am getting. 6th and the 10th term is 44. 6th term is how much, children? A plus 5D. 10th term is how much? A plus 9D is equal to 44. Simple it is. Sum of the 6th term, very important words here. See, sum of the 6th and the 10th term is 44. Find 3 terms of AP, that we will decide later on. So now here if I take it, A plus A, it is 2A, 5D plus 9D, it is 14D is equal to 44.
Again if I take 2 common here, then a plus 7d is equal to 44. So children, again 2 common here, then 2 cancels, how much I get? 22. So I hope you are able to understand it. So what I get is a plus 7d is equal to 22. So children, from the given information I have got 2 equations in 2 linear equations in 2 variables, and now you know the elimination method very well. What does the elimination method says? A plus 5d is equal to 12, a plus 7d is equal to 22. If I simplify it further, plus a, I'll change the sign, plus a minus a cancels here, so 5d minus 7d is minus 2d, 12 minus 22 is minus 10, so ultimately d is 5. D is 5. Now I will put it here. If I put it here, then 5 plus 5d is equal to 12. A is how much? A is not 5, I am sorry here, actually some small correction we will have to make. What is that correction? A plus 5 into 5 is equal to 12. So this becomes a plus 25 is equal to 12. So this becomes a is equal to 12 minus 25, that is equal to minus 13. So again I repeat, I got the common difference as 5. So 5 into 5 is 12, 25. 25 I shifted to right side. So 12 minus 25 is minus 13. Now what you want is, you want the third term of an AP. If you want the third term of an AP, it is very simple. The first term is 13. The first term is minus 13. Okay. Second term will be minus 13 plus what is the common difference? 5. And the third term will be minus 13 plus 2 into 5. Minus 13 plus 2 into 5. So if I further simplify, then what is the answer that I am going to get? Minus 13. Minus 13 plus 5 is minus 8, and 2 into 5 is 10. So minus 13 plus 10 is minus 3. So children, what is asked is, find the 3 terms of an AP. So from the information, 4th and 8th term is 24, 6th and the 10th term is 44. I have to find the 3 terms of an AP. And this is how you can find the 3 terms of an AP. So I hope you understood how we can convert the given word problem or given situation into an AP formula and then solve it. Now question number 19, I did not solve it. The problem is of, I think, Subbarao. In 1995 he joins a job, then he gets some salary and some increment of 2000 rupees, and by which year his salary will reach 7,000, something like that question is there. I have opted out of that question because I want you should solve it yourself, because this 20th problem contains decimal point, and I personally feel that students find it difficult to solve the problem when decimal points are there. So I thought of taking up this challenge of solving the difficult problem and leaving the easy problem for you to solve as homework. Now the question reads like this: Ramkali saved rupees 5 in the first week of an year. रामकोली 5 रुपये वो बचा रही है शुरुआत में, बाद में वो क्या कर रही है, अपना पैसा वो बढ़ाते जा रही है. कितना बढ़ा रही है? 1 रुपीज़ 75 पैसे वो बढ़ा रही है. अगर वो इस तरह से करते चले जाएगी तो 20 रुपये 75 पैसे कब जमा होगा?
यानी थोड़ा ध्यान देना, शी स्टार्ट्स विथ 5 रुपीज, देन शी इंक्रीजेस 1 रुपीज 75 पैसे, दैट मीन्स 6 रुपीज 75 पैसे. Again she will add 1 rupees 75 paise, you will get the third term. Again she will add 1 rupees 75 paise, you will get the fourth term. Again she will add 1 rupees 75 paise, you will get the fifth term. I am not interested to add. You may be thinking sir बोल रहे हैं मगर लिख नहीं रहे हैं. मुझे जरूरत ही नहीं ना उसकी, क्यों लिखूं मैं? क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में जो नहीं चाहिए वो भी आप लिख देते हो, जिसकी वजह से समय आपको कम पड़ता है. यहाँ मुझे जो चाहिए उतना ही मैं लिखूंगा, वॉट एवर आई वॉन्ट दैट मच ओनली आई विल राइट. यहाँ ये सारी बातें मैं आपको, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो रामकली 20 रुपये 75 पैसे कौन से सप्ताह में जमा करेगी? व्हेन शी विल गेट 20 रुपीज 75 पैसा, ये क्वेश्चन है. तो मेरा मकसद यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझाना है. तो सिंपल है बच्चों, फर्स्ट टर्म है आपका 5, a1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5. आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 रुपीज 75 पैसा है, क्योंकि हर बार वो 1 रुपये 75 पैसा वो भरते जा रही है. फिर आपको यन आपको ढूंढना है. यन कितना दिया है, क्या नहीं दिया है? इससे फर्स्ट वीक ऑफ एन ईयर एंड देन इंक्रीज योर वीकली सेविंग्स बाय दिस वन. इफ इन द वीक हाउ मच सेविंग, नहीं दिया है बच्चों आपको, यन ही आपको ढूंढना है. ओके फाइन. आपको एन दिया है, कितना दिया है? 20 रुपये 75 पैसा, 20 रुपये 75 पैसा. तो आपको यन ढूंढना है. सिंपल है, फॉर्मूला आप हर हाल में लिखोगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये जरूर लिखना है आपको. तो ये लिखोगे तो एन कितना दे रखा है आपको? 20 रुपीज 75 पैसा. आपका फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म है 5 सही है मेरा, प्लस यन तो मुझे ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस है 1 रुपीज 75 पैसा. तो इस 5 को अगर मैं इधर भेज दूं बच्चों, तो 20.75 माइनस 5. अगर आपने मेरा बेसिक मैथ्स का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैसे इस तरह से इसको करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करना है. आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको 5.00 ले लोगे, तो उसके बाद अगर इसको डिवाइड करने जाओगे आप, तो ये हो जाएगा बच्चों 75 या 75, और 20 माइनस 5 होगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75. उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा है सारी बातें. तो अब ये होगा 15.75 बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1. आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट इज देयर, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट इज देयर, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ. ये भी मैंने आपको बेसिक मैथ्स वीडियो में आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये होगा 1575 डिवाइडेड बाय 175 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो ये आप मान लीजिए आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, जिसमें कर सकते हो. देखिए आप 175 इंटू 9 अगर आप कर देते हो तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली आपका जवाब मिल जाएगा. नहीं सर हमको नहीं जमता है तो आप डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग भी आप कर सकते हो, मगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बता देता हूँ कि 175 इंटू 1 होगा और ये 175 इंटू 9 होगा. नहीं ये तो 25 का टेबल कीजिए आप. अब इस माइनस 1 को मैं इधर ले लूँ तो क्या होगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n होगा, और 9 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 10. सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि रामकली ने अगर 5 रुपये शुरुआत में बचाना शुरू कर दिया और हर सप्ताह अगर वो 1 रुपये 75 पैसा बचाते चले जाएंगे तो 20 रुपये 75 पैसे होने के लिए उसको 10 सप्ताह का समय चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, if Ramkali starts investing ₹5 in the first week and if she keeps on increasing 1 rupee 75 paisa per week in order to get 20 rupees 75 paisa, Ramkali will take 10 weeks of time.
So my dear children, this is how AP we have to solve the problems. I think nth term of an arithmetic progressions, the entire exercise I have solved it, and I hope you might have enjoyed my teaching. So kindly go through all the exercises. This is the last part of nth term of an arithmetic progression. From tomorrow onwards, we will go for sum of nth term of an arithmetic progression.